Devakshar is bringing these series for you. Shivananda Vani. आपको आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये हम कंटिन्यूअस सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने शिवानंद वानी के फर्स्ट पार्ट के 8 यूनिट्स किए हैं और आज हम 9th वाला करने जा रहे हैं। शिवानंद जी श्री रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल थे, तो उन्हीं का आज हम ये 9th पार्ट पढ़ते हैं। किसके बारे में है? रिजिड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिनरी पेनेंस इन द इवेंट ऑफ फेलियर। ये बहुत ही कठिन समझ में लगता है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, पर महापुरुष महाराज जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो ये हम आज सुनेंगे कि ये सुनने में जितना कठिन लग रहा है वो उतना कठिन है नहीं, इतना प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। जगह क्या है? बेलूर मॉनेस्ट्री, बेलूर मठ। समय है अगस्त 1925। It was around 8:30 in the evening. Mahapurush ji was seated on a couch in his room, talking with a monk belonging to the ashram at जामतारा। जामतारा एक जगह है, वहाँ के आश्रम में वो रहा करते थे, तो आए हैं मिलने। He said, the monk says, "Today I received a letter from so and so. In the letter he wrote specially about himself. He mentioned that one evening he had come to the railway station to see you off, and returning to the monastery after 10 o'clock, he had had his supper and gone to sleep without finishing the daily routine practice of japa." जप किए बिना ही वो सो गए थे, ऐसा उन्होंने महापुरुष महाराज को लिखा किसी एक सन्यासी ने। Later at night, when he awakened and remembered his mistake, he felt very bad. He consulted the sadhus of the ashram and asked what amendments he should make for the mistake. Nobody could give him a satisfactory answer. Being much disturbed and repentant, he wrote to me for advice, requesting that I write my opinion of what he should do, that I prescribe some penance. I shall write to him accordingly. A brahmachari asked, "Maharaj, what penance would you prescribe?" तो अब सुनते हैं क्या प्रायश्चित बोलते हैं महापुरुष महाराज। महापुरुष महाराज जी बोल रहे हैं, not much of a penance. Let him fast a day, 24 hours only. So 24 घंटे सिर्फ उपवास रखना है, and practice japa all he can during the fast period. तो उनको इतना खराब लगा है, ये ही तो बहुत बड़ा in itself penance है, itself it is a प्रायश्चित। Of course, it doesn't have to be a complete fast in which one is not supposed even to drink water. He must eat 1 or 2 pieces worth of puffed rice at night too. As far as practicable, he should do some japa, counting his beads not less than 10,000 times. Such rigid adherence to spiritual practice is very good. A monk, Swami Brahmananda ji, also asked me to do something similar. He said, repeat the mantra 10,000 times every day. हम तो 1000 बार कर ले वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो 10,000 बार मंत्र जप करने के लिए बोल रहे हैं। It will do you immense good and continue this at least for a year. तो ये सब एडवाइस हमारे लिए भी है कि हम भी इतना जप जितना हम कर सकते हैं हम करें। But I couldn't keep up the practice for a year at a stretch. Nowadays, the duties of the ashram keep me so busy that I hardly find time for spiritual practice. अब देखिए इसका उत्तर महाराज क्या देते हैं। महाराज कह रहे हैं,
It can so happen that owing to the pressure of work, a person may once in a while not be able to do his usual amount of spiritual practice, but he should not omit it altogether. Of course, work at the monastery is also a form of service of the Lord and makes one think of Him, but one should not therefore totally neglect the practice of meditation and japa. How long can a person do work? सारा टाइम तो इंसान काम नहीं करता. A time will come when he will lack the physical energy to do it. बुढ़ापा आता है तो कम हो जाता है. How will he then occupy his time? Besides, unless work is accompanied by meditation, japa, and other spiritual practices, its very spirit is lost. Then one forgets it is the Lord's work and not his own. Egotism and pride come, and instead of being purified by the work, the heart becomes defiled. The object of one's life is not work, it is the realization of God. The work that makes one forget God is highly degenerated. So, if it is such kind of work जो कि आपको भगवान को ही भुला देता है, काम करते करते आप सोचते हो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो बस गए, सारा मेरे काम का जो इफेक्ट है वो चला जाता है. The work that makes one forget God is highly degenerate. In the midst of 101 activities, a person should keep up his regular spiritual practice. That alone can bring genuine serenity of the mind. That alone can make a person fit to engage in work in the right spirit. So, the right spirit of engagement in work is to work with the realization that I am doing God's work. This is not my work. उस हिसाब से ईगो कभी भी बीच में नहीं आएगा और हम दुखी भी कभी नहीं होंगे. तो महापुरुष महाराज कितनी आसानी से हमको सब कुछ बता दे रहे हैं. हमको जो पेनेंस करना है या हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कितनी आसानी से वो सॉल्व कर रहे हैं. हम सब इसी तरह से अगर उनकी बातें ध्यान में रखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा हमारे लिए आगे बढ़ना, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी. होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड ऑल्सो और हमारे साथ जुड़े रहिए. हमेशा के लिए देवाक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए. आज के लिए बस इतना ही. हम फिर से दोबारा हाजिर होंगे शिवानंद वानी के साथ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. नमस्कार.